Hi, I'm Kunal Raginwar. So today I'm going to talk about a stock and what mistakes I did and how horribly a stock can do things and the trade can go really horribly, right? And the important part here is how I stayed calm, managed the position, and then you'll get to see what exactly happened. Before I start, please share, like, and subscribe to the channel. So now, welcome to the Game Changers. तो ये एक स्टॉक है, राइट? ये स्टॉक में दिस so this was in an uptrend. This stock was doing really well and it was in an uptrend. ठीक है? What I did, the first mistake that I did is that I put a buy order here. मतलब ये जो 20 मूविंग एवरेज आपको दिख रहा है, ये लाइन जो 20 मूविंग एवरेज है, यहाँ पे मैंने एक बाय ऑर्डर डाल दी, राइट? क्यों? क्योंकि थोड़ा सा बोल सकते हैं ना, कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस था कि इतना अच्छा मूव मिला है, सो लेट्स ट्राई एंड ऐड टू द पोजिशन. तो आई स्टार्टेड ऑफ विथ अ स्मॉल पोजिशन. What was my stop loss? My stop loss was this pivot low. ठीक है? So now two things. The first mistake was that I bought here just like that without any confirmation, which normally I don't do, right? The second mistake, you'll get to see what exactly happened. So now I'm going to go to a daily chart. Can you see? Can you see the big mistake here? First is I put an order. The second mistake is I did not wait for any रिवर्सल और कंफर्मेशन. मैंने सिर्फ ऑर्डर डाल दी. इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस. तो यहाँ पे ऑर्डर डाल दी. आफ्टर दैट माई स्टॉप लॉस वॉज दिस. वॉट हैपेंड, यू कैन सी वॉट हैपेंड एग्जैक्टली. इट गैप डाउन मैसिव, right? Some news had come out in this stock and then it gapped down massive. तो ये गैप डाउन के बाद नॉर्मली क्या करते हैं लोग, थोड़ा सा पैनिक करते हैं. तो माई थिंकिंग वॉज आई एम नॉट गोइंग टू पैनिक, आई एम गोइंग टू मैनेज माई ट्रेड एंड समहाउ गेट आउट ऑफ इट, मतलब एट अ ब्रेक इवन और एट सम रैली. दिस वॉज माई थिंकिंग. ठीक है? And this was a really good stock, fundamentally really great stock, and I had started off a position here. So what I did was, when it gapped down, I immediately at this point bought puts. Here I bought a put, and that put I squared off after this small green doji. इसके हाई के ऊपर I squared the put out. Okay. What happened is at this point I was hedged. तो क्या हुआ, I had decided कि अगर प्राइस ये लो के ऊपर, ये लो के नीचे गया तो आई एम गोइंग टू बाय पुट्स अगेन. The thinking was this is a fundamentally great company, but because of some bad news it has fallen, so I shouldn't panic. That was the only thing. I just wanted to remain calm and not panic. नाउ आफ्टर दिस प्राइस, ये जो लेवल मार्क की है, ये वापस आई नहीं. इट स्लोली स्टार्टेड हेडिंग अप एंड व्हाट आई हैड थॉट इज कि डू आई बाय पुट्स हियर. आई वाज लाइक नो नीड, लेट्स लेट दिस लेवल गो. ये ऑलरेडी लोग यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं जो शॉर्ट किए हुए हैं, एंड इफ दिस हाई गोज आई एम गोइंग टू एड. सो दिस is where I added first time, right? Now I'm going to change the colors so that my additions can be seen clearly. This is where I added. So this was my original position, this was my original stop. यहाँ पे मैंने put buy किया था, यहाँ पे put close किया था, and this I was waiting to buy more puts. इसके बाद यहाँ पे मैंने add किया long, okay, with what is the stop loss? You very well know this is the stop loss. ठीक है? Once this happened,
what I did was, once another pivot low was made, I added more here, right? And with this stop loss, ये जो मेरा नीचे वाला स्टॉप लॉस था ये भी मैंने यहाँ पे ला दिया. सो आई डोंट हैव अ लॉट टू लूज व्हेन आई एम एडिंग. ठीक है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पिरामिडिंग. आफ्टर दैट, वंस दिस हाई वॉज क्रॉस्ड, ये जो हाई क्रॉस हुआ था, राइट, आई जस्ट वेटेड फॉर अ बिग कैंडल टू शो अप आफ्टर दिस हाई वॉज क्रॉस्ड, विच हैपेंड हियर. ये जो कैंडल, so I had exited my full positions here. This was my exit. So I'm going to repeat again. I bought here, which was a mistake. This was my stop loss. It gapped down. उसके बाद मैंने hedge किया. hedge करने के बाद मैंने hedge square off किया, and then I added equity twice. Right? And this is where I exited the position. It was ये बोलने के लिए बहुत ईजी है, बट टू डू दिस it is very difficult, and it requires a sense of calm in you. You don't need to panic. If you panic, then it can lead you to make some bad decisions. ठीक है? So why am I sharing this? Because sometimes we can do very stupid things. ठीक है? Just to realize that you have done a stupid thing, and then to stay calm and manage that position. Now this position, not necessarily it would have been so smooth. वो थोड़ा सा रोक ज़्यादा टाइम पास करता तो मैं निकल जाता, राइट. बट लकीली दिस टर्न्ड आउट टू बी स्मूथ, एंड माई एडिशंस आई वॉज गेटिंग एज पर माई सिस्टम. So staying calm is very, 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 very important. No matter what. Just to think a little bit practically and not get very emotional can take you a long way. Chalo, bye. See you on Monday.